Fantastic. Good morning to every one of you, and hope I am audible to each one of you, and the volume is loud and clear. And it's a fantastic morning. Just give me one moment, and it's going to be an amazing time. We are going to be here from 11 to 1, and we so ensure that by the time of 1 o'clock, you are all here with me. I'm just figuring out if things are fine and fair, and I'm not going to consume too much of the bandwidth, because in case I get disconnected, you need to ensure that you stay back with me. So this is Ashish Kyal here. Welcome to Ashish Kyal Trading Gurukul, a learning series. And here we are again meeting on a Saturday morning, ensuring that I'm going to give you everything and anything you would like to know टू ट्रेड द मार्केट्स। तो ये वेबिनार में हम 2 घंटे मार्केट्स के बारे में समझेंगे, ओवरऑल ट्रेंड क्या है उसके बारे में समझेंगे। अगर मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क के कारण, या आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो, यू हैव टू इंश्योर यू कम बैक, रिकनेक्ट विथ मी हियर, बिकॉज अगर आप इतना भी पेशेंस नहीं रख सकते, इफ यू गेट डिस्कनेक्टेड, आई गेट डिस्कनेक्टेड एंड नॉट रिकनेक्टिंग, एंड यू गेट लाइक यार नहीं चल रहा है, छोड़ देते हैं, देन पैसा बनाना मार्केट से तो पॉसिबल ही नहीं है आपके लिए। ओके, सो यू हैव टू एंश्योर दैट यू जस्ट आर विथ मी ऑल द टाइम, and we will be discussing about stocks, will not stocks, we'll discussing majorly about the method. So I'm not going to tell you how to which stock to buy on a Monday, to be very honest. I'm going to give you the tool which you can use to buy any stock basis of the tool that we are going to discuss. जो हम टेक्निक होगा, वो टेक्निक के बेसिस पे आई एम गोइंग टू टेल यू कि कौन से स्टॉक्स को ट्रेड करना है, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू बी डूइंग क्लियरली. सो डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स. Before we start, basic housekeeping methods which we have to ensure, basic housekeeping which we have to ensure: no phones, no social media, no twittering, no whatsapping, nothing. 2 घंटे आपको इंश्योर करना है यू आर हियर विथ मी एंड यू आर कंप्लीटली फोकस्ड विथ मी. क्योंकि अगर आप फोकस नहीं रहेंगे तो आप समझ के चलिए वी आर डूइंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट हियर, एंड वी आर गोइंग टू बी ensuring each one of you are very important for me. हर एक जन जो ये वेबिनार में है, we are going to be nearly houseful now. So ensure you do not leave this webinar. This webinar is also telecasted live on YouTube. It's telecasted live on Facebook group and Facebook page of Wave Strategy Advisors. Just ensure, अगर आप डिस्कनेक्ट हो गए वापस आप कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ पर कनेक्ट करने चाहते हो एंड यू आर देयर over with me, just ensure that people who are there with me on the YouTube and the live Facebook platform, you can join here along with me by simply clicking on the link which I'm going to give you right now. You can join me on this program right now over here on this specific link. तो अगर आपको ज्वाइन करना है डायरेक्टली यहाँ पर तो आप ज्वाइन कर सकते हो. ये लिंक मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है अभी. So just ensure you are there with me and you are all focused along with me. So it's a wonderful morning, and हम क्या करने वाले, पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ओवरऑल अगर आपको ट्रेडर बनना है, ये आप ऑलरेडी अच्छे ट्रेडर है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है आपके ट्रेडिंग में. इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट विथ योर विथ मेकिंग प्रॉफिट्स, या आपने प्रॉफिट बनाया एंड उसके बाद में यू आर स्टार्टेड लूजिंग मनी, तो उस प्रॉफिट्स को इंटैक्ट कैसे रखना है, यू नो, ये सब चीजें हमेशा ट्रेडर्स के माइंड में रहती है. नेक्स्ट, जब मैंने शुरू किया था, जो मैं हर वेबिनार में बताता हूँ, 2008 में आई यूज्ड टू वर्क विथ लीमन ब्रदर्स. फॉर मेनी ऑफ यू हु माइट नॉट नो मी, आई एम जस्ट गिविंग यू अ वेरी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट दैट. एंड उसके साथ में एक पहले मैं एक पोल ले लेता हूँ, इज दिस योर फर्स्ट वेबिनार, सो दैट मुझे पता रहेगा अगर आपका ये पहला वेबिनार है सो आई कैन देन पेस इट अकॉर्डिंगली. अगर ज्यादा लोग रिपीटेड है तो आई कैन पेस इट अकॉर्डिंगली. माय यूएसपी इज दैट I can explain the most simplest of the methods, okay, from the foundation of technical analysis to the most advanced method.
and advanced method I can explain you in the most simplest form that you might have never thought of. तो हर एक चीज मैं आपको explain कर सकता हूँ simple से लेके advanced तक. I'm not boasting about myself. I have given more than 15 years to this market. I have done fundamental analysis, I have done technical analysis, I have written a book, Effective Trading in Financial Markets. I'm stopping a poll right now. Thank you very much for participating. So I can see there are many of you who are a first time registrant here. So I'll accordingly pace the lecture accordingly. People who are there on YouTube, if you are a first time registrant, say yes. For the first time, AKTG. AKTG is Ashish Kyal Trading Gurukul. Okay. So just ensure that you are with me and you are not getting carried away. So I have written a book जो लंदन अक्टूबर 2020 को लंदन में पब्लिश हुआ, Effective Trading in Financial Markets Using Technical Analysis. The book is co-authored by Smita Trivedi Roy and it's published in London. In Asia available now on trivedikyal.com. अगर मैंने एक बुक लिखा है टेक्निकल एनालिसिस पे, वो भी पेंडेमिक के बाद में, पेंडेमिक मार्च क्रैश के बाद में, आई एम श्योर काफी जनों ने, सो टेल मी कितने जनों ने 2020 के मार्च के क्रैश में बहुत पैसा कमाया. ओके 2020 के मार्च के क्रैश में मैं ये नहीं पूछ रहा आपने कितना लॉस किया, मैंने पूछ रहा हूं आपने कितना पैसा कमाया 2020 मार्च के क्रैश में. How much money did you make in 2020 crash of the market? That is what I am asking you, because most of the people say that I have lost money, but to be very honest, that was the time period you could have made a lot of money. चलिए मार्च में नहीं कमाया, उसके बाद तो तेजी थी. In the up move, how many of you are able to capture that entire trend? In fact, I'll tell you one thing. Most of the people that I spoke with, they actually sold off when the Nifty was at 8,000, at 8,500 पे उन्होंने बल्कि मार्केट में पैसा कमाने के बदले जो पोजीशंस था वो बेच दिया. Now that has what has happened in March 2020. उसके बाद में जब रैली हो गया तो सोचा यार ये तो बहुत रैली हो गया. How will I enter the market at 11,000, at 14,000? At 15,000, now everyone started saying Nifty is going towards 20,000. And we are seeing a crash. On Friday, Nifty was down by 600 points in single day. Okay, that happened only in May 2020. In single day, इतना बड़ा correction May 2020 में आया था. But हुआ क्या? जिसने भी इस अपमूव में भी कमाया उन्होंने एक ही दिन में पैसा लॉस कर दिया. So what is the overall crux of what I'm trying to explain you? Making money first thing, ensuring you conserve what you made is the next thing, and ensuring you do not lose your capital is the third thing. So these are the things which are very important, and you have to, that's why pay extreme attention how we can leverage the option instrument in order to trade in the market. This is very simple technique I'm going to tell you. The next thing then will come to your mind is, if it is so simple technique, then why everyone is not using it? Because not everyone is disciplined. You require discipline. Discipline का मतलब है greed and panic से बचना है. So market में सबसे बड़ा fear or greed is the reason why people lose money, not the method. Methods are simple, and I am going to give you something so simple, so easy, and so workable, right? You can apply it immediately. That's what I'm going to do. Okay, so I'm laying down the foundation of what we are going to do, and I'm going to explain you along with my experience. क्योंकि बाकी तो आप बुक्स पे पढ़ सकते हैं, आप गूगल पे जाके देख सकते हैं कैंडलस्टिक क्या है, लेकिन जो एक्सपीरियंस ट्रेडर का है over the years which I have developed. So when I started, I worked with Lehman Brothers 2008. Lehman Brothers went for bankruptcy. Nomura took over. I was in US for some time. I was in London, worked in London for some time. And I worked in India. And I saw that during the crash, everyone is panicking. And किसी को पता ही नहीं है क्या होगा. But you know what? I came across a person
who actually was able to predict it, that the crash will come, and it came. And he was able to predict the turn, and that happened. And it was so marvelous. I said then, iska matlab hai ki you need to have those tools which these people are using, and these institutions are using, these hedge funds are using, जो आम आदमी के पास में नहीं है. Okay, it was possible to predict, and they made a lot of money. शायद आपको पता नहीं होगा. You can go and search on Google. You will get the names of hedge funds which made billions in this market. Okay, it was possible to predict the March 2020 crash. I'll tell you, if you don't believe me, February 2020 में I started my mentorship. उसके पहले I was doing a lot of training. So I've been teaching for almost 15 years. I've been trading for more than that. I've been researching for a lot of years. I've seen everything that you can think of in the market, every cycle up and down. So Feb 2020 में जब mentorship start किया, before the crash of March, we were analyzing the market before that crash started. And I said, if this low gets taken out, we are headed for a big fall. And what you have to do is to follow the strategy I am giving you. I told this to all of my mentees. You know, अगर वो strategy पे disciplined way से approach रखते थे, they would have ended up making 4,000 points, 3 to 4,000 points on Nifty. Trust me, there are people from that batch. Nilesh Pawar is here, I'm sure. These people were there in Feb 2020. Okay, so that was extremely crucial. And as soon as that level was taken out, we saw a big crash happening on the downside. And Nilesh is saying we are one of the fortunate person. Thank you, Nilesh. If you can simply address it to all the attendees here and mention that you are a part of that Feb 2020. Rohit is also a part of that Feb 2020 mentorship batch before the crash happened. So someone just commented that no one can predict the crash, but over here you can clearly see that we were able to do that. So it's again, what I'm trying to do is you should believe these methods work wonderfully. And that mentorship batch, I have been extremely excited about them, and this was simply superb, right? The level, so all of those things, we will look at those things. So thank you, Nilesh, and thank you, Rohit, for mentioning about it. So they are a part of that batch, and they are here in this webinar also. चलिए, let's move ahead. Give me 1 second. And you need to be very patient. अगर आप patience नहीं रख सकते market में, तो आप पैसा वैसे भी नहीं कमा सकते हैं. Okay, you have to be ensuring you are patient. You have to be patient. So here Rakesh is there from that batch. So Rakesh ने भी वही बोला. Thank you very much, Nilesh, and fantastic. Just give me a moment, please. Just give me 1 second. And I'm just going to share across my slide, which talks about how we have to go about the entire planning stage of executing trades. कैसे हमें plan करना है trade execute करने के लिए. Okay, using the bands. So that's what we are going to do. I'm going to hide myself now. And देखिए, ये webinar free है. There is nothing that you have to possibly lose. If you want, you can ask someone of your friends, your colleagues, your family, and they can connect with this webinar. There is nothing to lose. The reason I am doing it, I want to share across my learnings, which I have taken so much of time to get here. Okay, here it is. Wave Strategy Advisors is an independent research company, and this provides research. And Ashish Kyal Trading Gurukul is the platform where we explain everything. You can see me on CNBC TV 18, CNBC Awaaz, ET Now, Bloomberg Quint, lot of media channels. I conduct Friday at 4 webinars. I've won a lot of shows. You can see it here. I've won a lot of shows and a lot of those things. This webinar is going to be available only to people who are attending right now. It's one time. You ensure you are looking at it, and if you want to invite someone, you ensure you invite them right now. They might not have access to it later on. उनको access नहीं मिलेगा बाद में. I've written for Economic Times, Navbara Times के section में, and I have trained anyone and everyone. You can see that. Let's just move ahead.
and you can ask them to simply join me on my YouTube. Uh, @Kyal Ashish, my YouTube channel. They can go there, and people who are there on the YouTube, simply ensure you click on that live subscribe button and you share it across there. Click on the bell icon so that you keep getting the alerts for this webinar. So do that. चलिए आगे बढ़ते हैं. So this is the book which I have written. This is how it has been explained to. This has been endorsed by everyone. You can see from SEBI to Robert Proctor of Elliott Wave International. My Twitter handle is @KyalAshish. अगर आपको ये session अच्छा लगता है, so ensure you tweet about it, you share about it, you share my vision of ensuring we create traders. ओके, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है आपको. एक ट्रेडिंग गुरुकुल टेलीग्राम ग्रुप है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं. दैट टेलीग्राम ग्रुप विल हैव लॉट ऑफ कंटेंट. सो एंश्योर ट्वीट करना है @KyalAshish पे, टेलीग्राम ज्वाइन करना है एक ट्रेडिंग गुरुकुल. ये सब चीज आप करना है, अभी नहीं, बाद में शांति से ये सब चीज आप देखिए. एक इकोसिस्टम क्रिएट किया है हमने, जिससे आपकी लर्निंग कंटिन्यूड रहे. आप हमेशा से यू आर इन टच विथ मी. Okay, let's just move ahead now. What is technical analysis and what is a candlestick pattern that we want to understand? टेक्निकल एनालिसिस और कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, एंड देन वी विल स्टार्ट अप्लाइंग दोज ऑन प्रैक्टिकल चार्ट्स, एग्जांपल्स, लॉट ऑफ दोज थिंग्स. So let's just do that. Again, I am repeating, this is only going to be there for 2 hours of time. Ensure you focus your attention here. Take responsibilities of your action. By joining this webinar, you have ensured that you are responsible. You want to get to the league of becoming a big trader. Okay, does not matter आप 15 मिनट ट्रेड करें कि आप 1 घंटा ट्रेड कर सकते हैं दिन में, कि आप पूरा दिन एज अ ट्रेडर बनना चाहते हैं. ये सब माइंड से निकाल दीजिए. और अगर आपको लगता है यार ऐसे वेबिनार्स तो बहुत होते हैं, ये तो गूगल पे ही पड़ा हुआ है कैंडलस्टिक के बारे में, ये you are in for some eye-opening session right now. Okay, let me just explain you over here. So if you look at this, what is a chart? I'm going to start very basic, very easy on the chart. Now Pranav is saying that I'm actually self-praising myself. Pranav, if you think this is self-praising, I'm not sure if you should be in the part of this webinar. I have done big things and I'm okay if I want to self boost about it. क्यों नहीं करना है हमें? अगर हमने लाइफ में अचीव किया है कुछ बड़ा, तो क्यों नहीं करना है? My point is that. So let's just do that. If you think that's not what you want, then up to you. Okay, let's just try and again look at this. This is a price scale and this is a time scale. Over here we can clearly see that I can have 100, 101, 102, 103. टाइम स्केल का मतलब है यहां पर you have to plot like say time which is 10th, 11th, 12th, 13th, 14th and 15th. Now candlestick, I am going to elevate your perception about candlestick like never before. कैंडलस्टिक का मतलब क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पहले, बिकॉज नॉट एवरीवन माइट नो दैट. सपोज मार्केट निफ्टी क्लोज्ड, सपोज एनी स्टॉक क्लोज्ड एट 100 rupees. It went to 101, it went to 102 and it went down to 101 again. Okay, now if you connect this and you connect this is known as a line chart. इसको बोलते हैं हम लाइन चार्ट. इसमें खाली क्लोजिंग कनेक्ट करते हैं. वी आर कनेक्टिंग द क्लोज. सो निफ्टी ओपन्स एट 9:15, क्लोजेस एट 3:30. बीच में ऑल सर्कस हैपेंस, ऊपर नीचे, बेयर्स कम, बुल्स कम, भालू आया, बुल आया, बट एट द एंड ऑफ द डे क्लोज कहां हुआ, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? So
that is very crucial. And by the way, just to share with you, my son who is 5 years of old, 5 years of age and 9 years of age, they are also attending this webinar right here with me. They are also attending. So imagine I can explain to the level where a 5-year-old kid is enjoying with me and a 9-year-old. Okay, चलिए बढ़ते आगे. So यहाँ पर ओवरऑल मूवमेंट क्या आया, अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो मूव है वो 100 रुपए से लेके 104 तक है. सो द मूव हैज कम फ्रॉम 100 टू 104. इफ आई हैव टू आस्क यू व्हाट इज द ट्रेंड of this, the trend is up. Okay, the trend is up. Chaitanya is saying his 9-year daughter is also attending and she is fond of me. Thank you very much. uh, so the trend is up. Over here we can clearly see that why the trend is up is if this high and this high, so this high is above this high, okay, and this low is above this low. This is known as a higher high and higher low. This is known as a higher high and higher low. ये बहुत ऑब्वियस सी चीज है जो मैंने आपको बताई. इसमें ऑब्वियस क्या नहीं है मैं आपको बताता हूं. हाउ डू यू नोट द ट्रेंड? When there is a move on the downside, once this low gets broken, can I say this low is now below this low? Can I say this low is now below this low? Clear hai? Can I also say ki high is below the high? Now see, this is where the difference will come. ये लो प्रीवियस लो के नीचे है, लेकिन अभी तक लोअर हाई बना क्या? लोअर लो बना. सी, ट्रेंड रिवर्स कब होगा? फ्रॉम हायर हाई टू हायर लो से ट्रेंड लोअर हाई और लोअर लो पे आएगा, तभी ट्रेंड रिवर्स होगा. समझ में आ रहा है? फ्रॉम दी हायर हाई हायर लो टू लोअर हाई लोअर लो. दिस टाइम फ्रेम कैन बी डेली. डेली का मतलब ये डेली का क्लोज है. आवरली, आवरली मतलब आवरली क्लोज है. दिस टाइम फ्रेम कैन बी एनीथिंग. Is that thing very clear? Now over here we do not have a lower high. See, this is a huge difference. ये बहुत बड़ा फर्क है जो आप नहीं सीख पाएंगे कहीं भी बुक्स में. अगेन आई एम रिपीटिंग. टेल मी, यहां पर ये पॉइंट नंबर थर्ड, ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 3 पे ट्रेंड चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ. द ट्रेंड हैज नॉट चेंज्ड एट पॉइंट नंबर 3 because we haven't seen a lower high. We have seen a lower low. We have seen a lower low, but we haven't seen a lower high, which means this break was a false break. Brilliant, Abhishek. This was a false breakout. Amazing observation. इसीलिए ये ट्रेंड चेंज करने के लिए what we have to see is we need to see यहां पर ऊपर का मूव आया and then we see a move on the downside, which means this high is now below this high and this low is now below this low. Now we can say that the trend is lower high and lower low. When the trend is lower high and lower low, ये समझिए डेली टाइम फ्रेम है. अगर लोअर हाई और लोअर लो बना, then you can say the trend has now reversed back to downside, and that's why you now have to look for selling opportunity in the market. ये पूरे टाइम में आपको बाय करके देखना था और अब आपको सेल करके पैसा कमाना है. द टाइम फ्रेम आप 15 मिनट्स पे देख सकते हैं. यू कैन चेक दैट ऑन एन आवरली चार्ट. You can check that on a weekly chart. You can check on any time frame. Okay. For learning of neo wave, Veera, I
the best way is to join the Master of Waves program. We are coming up, by the way, with Master of Waves season 2, which is going to be there. I'll talk about this later on. For now, इसका मतलब सेल करके पैसा, मतलब शॉर्ट सेल करके पैसा कमाना है आपको, या फ्यूचर्स में सेल करना है, या ऑप्शन में कॉल का राइट करना है. Okay. Now, if I have to ask here, how many of you understand the options trading over here? कितने जन ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं? Can you say a big yes if you are an option trader? Okay, fantastic. Everyone, there are so many of you who are seeing a big yes on an option trading. That is amazing, right? So it's very important that you clearly understand this concept, क्योंकि यही concept हम options पे भी apply करेंगे. Okay, यही concept हम option में भी apply करने वाले हैं. So you have to understand that clearly. Strike price कैसे लेना है, कैसे करना है, वो सब समझेंगे. अभी तक समझ में आया overall trend कैसे define होगा. Now let us check that. Let us now check the same concept from a candlestick perspective. Now candlestick perspective से देखते हैं कि इसी चार्ट को हम कैंडल पे कैसे देखेंगे, एंड यही चीज को फिर हम ऑप्शन पे अप्लाई कैसे करेंगे. सिंपल रखेंगे यार, नो ग्रीक्स, नो अल्फा, थीटा, गामा, वेगा, कुछ नहीं करना है हमें. ओके, व्हाट वी वांट टू डू इज हाउ टू राइट ऑप्शंस, हाउ टू सेल कॉल्स, हाउ टू बाय ऑप्शंस एंड मेक मनी इन द मार्केट. नाउ इफ दिस इज अ कैंडल, the problem with the line chart is that it misses out the high and the low. It only takes the close. But a candle is high, a low, open and close. So on a candle we have high, low, open and close. So that is what we have on a candle. Similarly, we have on a candle something like this. Agar close is this from the open, which means bullish trend. So this can be a white or a green or a blue. Okay, तो आप इसको कलर कर दीजिए. कौन सा कलर करेंगे? ग्रीन, white, blue. Okay, that was the voice of my son. So you can clearly make the color over here, fill the color. So let's fill the green color. ये रेड कैंडल है. अगर रेड कैंडल बनाना है, मतलब ओपन इधर हुआ और क्लोज इधर हुआ, विच मीन्स इट क्लोज्ड बिलो दी ओपन. ओपन हुआ 105 पे और क्लोज हुआ 103 पे, विच मीन्स मार्केट का ट्रेंड दिन में बेरिश था. अगर मार्केट का ट्रेंड दिन में बेरिश था तो इसके अंदर कलर आपको रेड करना है. However, now see the importance of what I am trying to do. अभी वापस से यहां पर ग्रीन कैंडल बनेगा, सपोज. Now you have to see markets are making higher high and higher low on closing basis. इसका मतलब है ये लो इस लो के ऊपर है, ये लो इस लो के ऊपर है. इसका मतलब ट्रेंड तो है ऊपर का, लेकिन बीच में एक स्पीड ब्रेकर आया. एक स्पीड ब्रेकर आके थोड़ा सा गाड़ी रुक गया. देयर वाज अ स्पीड ब्रेकर एंड देयर वाज अ माइल्ड halt in the trend. Do you think you want to stop on the speed breaker or you want to slowly cross that speed breaker? You will stop at that speed breaker, which is this red candle, or you will continue to cross again back on the upside, which means that since we are seeing a higher high and a higher low, I will not sell on the red candle, but I will again buy on the green candle. Are you with me? What are we trying to do?
candlestick, so far you saw a big red candle and you saw shooting star बन गया, यहाँ पर ये हो गया वो हो गया, लेकिन आपने ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड तो समझा ही नहीं. When you didn't understand the overall trend of the market, how will you make money? How will you make money if you don't know the trend? People short the market here, seeing a big red candle, and then they lose money. So then they lose money. That's why I am saying it's very important that you will not short the market now. When will you short the market? When you see a red candle again, you see a red candle again, you see a green candle here now, and then again you see a red candle. इसका मतलब हुआ मार्केट ने लोअर हाई और लोअर लो जब बना दिया, now you can sell the market. लोअर हाई और लोअर लो बना मतलब ट्रेंड चेंज हुआ. सो जो चीज मैंने आपको लाइन चार्ट पे बताई थी वही चीज मैं कैंडल पे बता रहा हूं. हायर हाई था तो बाय करके चलना है, लोअर हाई लोअर लो बना तो सेल करके चलना है. होता क्या है, वी वांट टू सेल दिस एंड वी वांट टू बाय दिस, बिकॉज हमारा माइंड उस तरीके से फंक्शन करता है ना. व्हाट डज माइंड सेज, यू वांट टू सेल एंड मेक मनी. वाई, मार्केट तो बहुत बढ़ गया यार ऊपर, अभी तो बेच के पैसा कमाएंगे. So you don't sell and make money here. You keep on looking for buying. Once the lower high, lower low is formed, then you sell and make money. Is this thing clear? That means Bank Nifty yesterday made a lower high and lower low. Yes, Shalabh, amazing. Shalabh Sharma, brilliant observation. Clear हुआ concept? इतना क्लियर, इतना सिंपल चीज था यार. लाइफ में पढ़ा भी था लेकिन सोचा नहीं इतना इजी भी होता है कोई चीज. सो अभी तक रेड कैंडल पे पैसा इसलिए नहीं बन रहा था क्योंकि लोअर हाई लोअर लो नहीं था. अभी लोअर हाई लोअर लो बना और रेड कैंडल बना, तब पैसा सेल करके बनेगा. ओके, यू आर अमेजिंग एंड यू हैव डन फैंटास्टिक. सो एंश्योर ट्रेंड इज योर फ्रेंड. अगर आपको लग रहा है कि दिस इज वर्किंग एक्सट्रीमली वेल, इनवाइट योर फ्रेंड्स राइट नाउ इन दिस वेबिनार. ओके, वी हैव जस्ट स्टार्टेड. अगर आपको लगता है कि ये बहुत अच्छे से चल रहा है, यू कैन सिंपली इनवाइट देम ऑन द यूट्यूब @kyal_ashish. और अगर आपको इस वेबिनार पे इनवाइट करना है जूम के प्लेटफॉर्म पे, तो मैं एक लिंक आपको दे रहा हूं. यू कैन जस्ट शेयर दिस लिंक विद देम. ओके, ये रहा लिंक. You can share this link with all of your friends and they can join me even now. We still have lot of time to go from here. This is just very simple technique I have told about. Now this technique we will extend further. Let's move ahead now. We will extend this further to understanding, a clear understanding of this technique. थोड़ा सा कैंडल के बारे में और समझने की कोशिश करते हैं. Okay, I am just going to clear this off and ensure you are a part of the Twitter @kyal_ashish, Telegram AK Trading Gurukul. क्यों? क्योंकि ये सब चीजें जो मैं अभी आपको बता रहा हूं मैं शेयर करने वाला हूं वहां पर बाद में. सो आपको वहां से ये चीज मिल सकती है. चलिए, फिलहाल तो यही फोकस रखना है. नो फोनिंग, नो व्हाट्सएपिंग. जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली. Okay, let's just do that. And I'm going to clear off the screen now. I'm going to explain now simple concept of candlestick further over here. Now if you are looking at this specific candle, which is a bullish candle. Now after this bullish candle, you again see a small bullish candle above. You see a big candle in this fashion formation. We are not going to say this is a green candle. I'll just fill in the color for your understanding. This is a green candle. This is also a green candle. Time frame you can apply it on any time frame. ये आप 15 मिनट पे करो कि 5 मिनट पे करो कि 60 मिनट पे करो. अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है, आज लेके 2 घंटे में बेचना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, ये आप 5 मिनट्स पे और 15 मिनट्स पे अप्लाई कर सकते हो. अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है, यू कैन अप्लाई दिस ऑल्सो ऑन अ डेली चार्ट, ऑन अ हाफ आवरली चार्ट.
So you can do that. अगर आप investor हो, you can apply this on a weekly chart and on a daily chart. So play around with different time frames. Now look at this. ये एक pattern बना. Now I am sure when you see this kind of a pattern, you will be like, अरे क्या pattern है ये? This is known as an inverted hammer. Okay, people might call it anything, everything. यार मैं simple काम रखना चाहता हूँ. I don't want to pay, stress my mind with lot of these things कि इसको क्या बोलना है. Logic क्या है समझते हैं. Now many of you I will say that this is an evening star, this is a hanging man, this is a sell in the market. नहीं, ये सब आपने बुक्स में या गूगल पे पढ़ा है या किसी और ने बोला होगा. मैं नहीं मानता इसको. Why? Why I will tell you. लॉजिक सोचो, कैंडल का लॉजिक. यहां पर लोगों ने बाय किया है. ओके, these big players have bought here. Why? Because they know more than what you think you know. Okay, so big players have bought here. Tell me, by seeing this candle, can I say one thing? ये लो अभी भी इस लो के ऊपर है. ये वाला जो लो बना, ये लो भी इस लो के ऊपर है. The low is above the low. Fair enough. ये वाला हाई और ये वाला हाई ऊपर है. तो ये कौन सा पैटर्न बनाया अभी तक हमने? दिस इज अ पैटर्न, राइट? कौन सा पैटर्न बनाया ये अभी तक? टेल मी, क्या पैटर्न है ये? हायर हाई हायर लो का पैटर्न है. अप ट्रेंड है. तो जो स्मार्ट ट्रेडर्स, आई डोंट कॉल देम institutional traders only, smart traders, these are mostly institutionals. Do you think they will get nervous seeing this much of move, this candle? Think logically. आपने कोई चीज इधर 14,000 पे बाई की है, यहां पर निफ्टी 15,000 पे आके थोड़ा सा लड़खड़ाया. आफ्टर टचिंग सीइंग 15,000, it went to 15,200, but again closed at 15,000. Do you think the guy who is bought at 14,000, this big institutional guy who bought at 14,000, will get nervous at 15,000 level? You think that? Absolutely no. You think now this evening star pattern carries any validity for now? ये चीज हमने डिस्कस की थी 2 हफ्ते पहले जब बैंक निफ्टी ने ये पैटर्न बनाया था और मैंने बोला था मंडे जाओ, अगर ये पैटर्न पे एक्सेप्टेंस आया तो बाय करो वापस. एंड मंडे बैंक निफ्टी वाज अप बाय अनदर 700-800 पॉइंट्स. बिकॉज फॉर 2 reasons. That's the difference between you and 95% of the trader जो पैसा लॉस करते हैं. क्यों लूज करते? क्योंकि ये देख के आप शॉर्ट कर देते हो. नहीं, यहां पर हायर हाई हायर लो बना है, मतलब ट्रेंड चेंज नहीं हुआ. ट्रेंड चेंज कब होगा? When will the trend change? The trend will change when you see the next candle which forms a high below this high and which actually gap down अगर हुआ. Okay, अगर gap down हुआ, now the nervousness will kick in. Now they will say ki boss get out. Now I want to ensure what I entered here, I am now getting out and making that much of money. Can I say the confirmation? So this is the first candle. I always say this is the second candle, which is the second candle Q. First candle is uptrend, second candle is pause in the trend, and third candle is the reversal candle. Your trade is not on the second candle, आपका trade third candle पे होगा. And on the third candle, when you see that happening, this third candle is a sell candle. I can clearly see, I think we are going house full right now. So people who are not able to join in this, ask them to join on the YouTube. I think a few seats are still there. If you are inviting anyone, ensure they are in now. Otherwise, they will not be able to join this telecast. It's not going to be available later on. Okay, do that. So can you just simply see this? Isn't it amazing? Now, इधर 3 चीजें मैं आपको explain करूंगा. Okay, 3 things.
What are those three things? पूरे वेबिनार में आई विल कीप ऑन गिविंग यू दिस थ्री मेथड्स, and these three methods if you use, you can trade well. One, first thing, trend was up, making higher high, higher low. Second, it paused in the trend by forming a reversal candle. It paused in the trend by forming a reversal candle. Third, this pause is confirmed by the third candle by ensuring it formed a lower high and a lower low. Now people get nervous and now they want to get out. Once they start getting out, you start seeing the move on the downside. So this pattern can be different type of pattern. फिलहाल inverted hammer आप बोल सकते हो. आई एम नॉट गुड विथ कैंडलस्टिक यार, मैं नाम तो मुझे आप पूछोगे तो पता ही नहीं रहता है. तो काफी सारे जन बोलते हैं सर आप 15 साल से ट्रेडर हो, इतना बुक लिखा है और आपको पता नहीं कैंडल को क्या बोलते हैं. मैं बोला वो तो गूगल याद रखेगा ना, मुझे याद क्यों रखना है, मुझे तो खाली लॉजिक याद रखना है कि लॉजिक क्या है, इसके पीछे साइंस क्या है. दैट्स व्हाट वी वांट टू डू. Okay, let us see the different variations to this candle also. So this is एक पैटर्न आपने समझ लिया. दूसरा वेरिएशन क्या होता है? You see this candle. ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल था, ये कैंडल एक रेड कैंडल है. द रीजन आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल ऑफ दिस थिंग इज, फिर हम इसको ऑप्शन के चार्ट पे अप्लाई करेंगे. कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगा. ओके, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन ऑप्शन होता क्या है, उसके लिए एक अलग क्लास करेंगे कभी. बट फॉर नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस सो दैट वी कैन स्टार्ट अप्लाइंग ऑन द ऑप्शन चार्ट डायरेक्टली. नाउ दिस इज नोन एज द बॉडी ऑफ द कैंडल. ओके, दिस इज नोन एज द शेडो. शेडो बोलो या वीक बोलो, this is known as the shadow or the wick of the candle. This is known as the body of the candle, this is known as the shadow. Clear? Why I am emphasizing so much? When I am looking at candlestick, body plays a vital role for understanding. This is a green body. Green body means open here and close is here. This is a red body. Red body means open here and close is here. Now, when I see a positive trend followed by a red body, this indicates कि पूरे दिन मार्केट में सेलिंग थी, यहां पर पूरे दिन मार्केट में बाइंग थी. So once there was a buying in this market and then selling in this market, you know what happened? Once there was a buying in this market and there was selling in the market, there was a state of confusion. The state of confusion means what? जो लॉन्ग है वो लॉन्ग है और बाकी जो लोग मार्केट में नहीं है वो शॉर्ट है. I'll tell you why. The logic is what? अप ट्रेंड में अगर आपने पैसा नहीं कमाया है तो आप चाहेंगे मार्केट नीचे आए. When in the uptrend you did not make money, you want markets to come down. Because why? You did not participate in the bull trend. Now you want it to correct so that you can participate. But correction आया 600 पॉइंट का निफ्टी पे फ्राइडे को, आप बाय करोगे क्या? 568 points nifty closed down on a Friday. Will you buy that fall? You will still not buy that fall. Again the market goes up. Then again you will say कि यार वापस से ऊपर आ गया. तो आपको एक लेवल बनाना होगा, आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी कि आप बाय करोगे कब. जब ऊपर जा रहा था तो नीचे की वेट कर रहे थे, अब जब नीचे गिर रहा है तो फिर वेट कर रहे हैं. तो करना क्या है लाइफ में? सेम स्टफ हैपेंस हियर. यहां कंफ्यूजन हो गया, क्या करना है? इसका मतलब सिंपल, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं, कुछ नहीं करना है, वेट करना है. किस चीज का? थर्ड कैंडल का. फर्स्ट कैंडल पॉज,
ट्रेंड अप, सेकेंड कैंडल पॉज। होता क्या है, बुक्स में पढ़ा है बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, सेल सेल सेल। नहीं यार, बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न पे सेल नहीं होता है। इट जस्ट इंडिकेट्स कि सेलिंग प्रेशर आज के दिन था, कल होगा इसकी गारंटी नहीं है। नाउ इफ ऑन अ थर्ड डे you again see a trend which is positive, ग्रीन कैंडल बना वापस से और ऊपर का ट्रेंड शुरू हुआ, यहां पर बाय करो। इफ यू ओनली यूज दिस लॉजिक ऑफ ट्रेडिंग, पूरा बुल ट्रेंड यू वुड हैव बीन बुलिश एंड नॉट शॉर्टिंग दीज रेड कैंडल्स, क्योंकि लोअर हाई लोअर लो बना के ये सेकेंड कैंडल पे थिंक ये हाई, ये लो और ये लो। On this bearish engulfing pattern, did you see lower high and lower low? bearish engulfing pattern पे लोअर लो तो बना, लोअर हाई नहीं बना। अगर लोअर लो बना और लोअर हाई नहीं बना तो फिर ट्रेंड चेंज हुआ ही नहीं। और ये आप इंट्राडे चार्ट पे करो, 15 मिनट चार्ट पे करो। यू कैन डू दिस ऑन अ 15 मिनट चार्ट, द ट्रेंड हैज नॉट चेंज्ड। If the trend has not changed, you are not selling this market, which means that the next day you again saw a low above this low and a high above this high. Go long. So आप sell कब करोगे? When you see the third candle. When will you sell? When you see the third candle. The third candle which forms here, which is high below this high and low below this low. Now you will say this is sell, because we saw a lower high and a lower low formation. Is this thing clear? So far so good? Okay everyone, अब भी हम चलेंगे प्रैक्टिकल चार्ट्स पे। चलिए, अभी लॉजिक तो समझ में आ गया, सिंपल कंसेप्ट है बॉस। हाउ इज द मूड राइट नाउ? हाउ इज द जोश? एवरी वन ऑफ यू, हाउ इज द जोश? आर यू एक्साइटेड विथ मी? थर्ड कैंडल, द कंसेप्ट ऑफ थर्ड कैंडल, 3 strategies, 3 methods, थर्ड कैंडल, दिस वन लॉजिक। इफ आपको समझा कैंडल स्टिक का, यू आर थ्रू 50% ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। आई डोंट नो लाइफ में लोगों ने इतना कॉम्प्लेक्सिटी क्यों कर रखा है। देखिए, आई कैन डू दिस, आई कैन डू न्यू वेव, आई कैन डू साइकिल्स, आई हैव रिटन रिसर्च पेपर्स, आई हैव रिटन एवरीथिंग, लेकिन ये फाउंडेशन इज सो फैबुलस दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, चितुरी सिंह, बड़ा जोश है सर, फैंटास्टिक। ओके, चलिए प्रैक्टिकल चार्ट पे चलते हैं। अभी बहुत ज्ञान हो गया यार, मैं भी ज्यादा I don't enjoy giving lot of gyan. I want to keep it simple. See, when I was with Liman yaar, 14 hours I used to work, 15 hours, 4 घंटे तो ट्रैवलिंग में वेस्ट होते थे। मैं सोचा यार नहीं करना है ट्रैवल, नहीं करना है इतना टाइम वेस्ट। I want to be a financially free. I want to need financial freedom. Okay, so financial freedom अगर चाहिए तो I need to ensure I have a parallel source of income, and that is possible like any other business. You can do it through trading. So trading is a business. कोई भी business के लिए आपको investment करना पड़ता है. You have to take that risk, and that is what I say. Trading is a business. So financial freedom can happen only if you are taking that risk. Okay, it will not happen if you don't take that risk. And trust me, money is in abundance. You need to think on those lines. Money is in abundance. That's a positive thought, and that is fact. When I see the screen, I see yaar $billion ऊपर नीचे हो रहा है, billions of rupees ऊपर नीचे हो रहा है। अगर उसमें से एक बकेट भी निकाल लिया आपने तो बहुत पैसा हो गया आपके लिए। So billions of money is getting traded. So it's in abundance, but for that you need to spend. Only if you spend you can earn. चलिए चलते हैं आगे की ओर। जागरण प्रकाशन up by 10%. I gave that on CNBC TV 18 yesterday. Thank you Thirumala. It was fantastic, right?
10% up जब मार्केट 568 पॉइंट्स नीचे था. Let me not spend much time, but let me just go back on the practical chart and explain you in detail now. I'm again repeating, if I get disconnected or if you are not able to connect, you don't worry. I will not leave you so easily unless you get it. Okay, let's just go on the chart now. स्क्रीन शेयर करता हूं मैं, एक ही सेकंड रुकिए, मैं ओपन कर रहा हूं investing.com. ठीक है, आप ओपन नहीं करेंगे, you are only going to be looking at this right now. Let me just clear off my screen. I'm going to share that across. यहाँ गए, investing.com पे जाना है, फ्री सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के लिए स्पेंड नहीं करना है कुछ भी आपको फिलहाल. ओके, एंड देन यू कैन सिंपली कम हियर एंड चार्ट्स पे क्लिक करना है. Okay, JK is saying incredible knowledge without charging a penny. Thank you, JK, very much. But I am going to be talking about my various different program modules later on. If you think this is something can give you so much, अगर मेरे साथ आप 4 महीना रहोगे तो कितना सीखने मिलेगा उसके बारे में बाद में बात करूंगा. चलिए यहां पर चल के देखते हैं चार्ट्स को. चार्ट्स पे जाना है, लाइव चार्ट्स पे क्लिक करना है. After you click on the live charts, it will open up. Okay. Now you want to open up over here in a very simple way. Acharya wants to join the course. Okay, we'll do that, Acharya. I'll explain you about Master of Waves program, BMW program, which I call Become Market Wizard program and mentorship. I'll tell that. Okay. Just ये लोड होने देते हैं, थोड़ा सा फाइट है इंफ्रास्ट्रक्चर का. आई एम श्योर एवरी वन ऑफ यू हैव दैट फाइट. सो मीनवाइल जिसको अगर ब्रेक लेना है, जस्ट डू दैट. आई एम स्टेइंग हियर एंड आई एम टॉकिंग. एज सून एज इट लोड्स विल स्टार्ट. सो मीनवाइल आप इनवाइट करिए लोगों को यार. ओके, सो जस्ट इंश्योर दैट. लेट मी जस्ट सी ये क्यों लोड नहीं हो रहा है. Let me just check. There is some problem with investing.com. तो ट्रेडिंग व्यू पे चले जाएंगे. बहुत सारा वेबसाइट है जहां पे हम ये कर सकते हैं. We don't really have to rely only on one website right now. We can do it on the multiple ones. So let's just check. Okay, it seems like investing.com is not working. Let's try with the another website, which is tradingview.com. If that works. होता है ना यार, कभी कभी गूगल भी डाउन हो जाता है. ये तो इन्वेस्टिंग है. ओके, चलिए देखते हैं चलता है क्या अभी. लेट्स जस्ट ट्राई एंड डू दैट. नेट ऑफ कर वाईफाई. जस्ट गिव मी 1 second. लेट मी जस्ट ट्राई दैट आउट. ओके, इट्स लो सिंस यस्टरडे. अभी तो एनएससी भी अटक जाता है. ओके, तो फिर तो चार्टिंग सॉफ्टवेयर तो क्या, अगर एक्सचेंज ही बंद हो जाता है तो बाकी तो बात ही क्या है, राइट? You can't really do anything about that if the NSE can go down. I'm not sure, it's not loading for some reason. Let's just try and check. I think investing takes data from NSE only. चलिए दूसरे चार्ट पे चलते हैं यार. GoCharting.com. There are number of charting platforms which we can use. Okay, let's just check. Okay, not sure. Something is fishy here. Let me do one thing now. Let me open up my own software. Investing is working. Okay, something is problematic at my end then. साथ में let us just try and understand the basic concepts so far that we did as of now, and let us just try and look at those concepts and apply that very clearly. Okay, just give me one moment please. I'm going to restart that, and I'm going to restart my application just to see if that is working now. What we tried to do so far
हमने अभी तक क्या कोशिश की करने की, वी जस्ट ट्राई टू लुक एट व्हाट इज हैपनिंग विद द कैंडलस्टिक. हायर हाई हायर लो मींस द ट्रेंड इज पॉजिटिव, लोअर हाई लोअर मींस द ट्रेंड इज नेगेटिव. कैंडल भले ही रिवर्सल कैंडल बना है, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू बी looking at that reversal candle for shorting. The reason being, we are looking for reversal candle only after we have seen a lower high lower low formation. Is this thing clear so far and so good? Okay, ये यहां पर ओपन हो गया. स्टॉप लॉस कहां लगाना है, नुकसान कितना करना है, टारगेट कैसे डिराइव कर रहे हैं, ये सब हम भी कोशिश करेंगे चार्ट को देखने के बाद. आर यू एबल टू सी माई चार्ट एज ऑफ नाउ? आर यू एबल टू सी द चार्ट्स? I'm going to hide the marks on the thing, and I'm going to go and zoom in the chart. If I'm looking at this specific chart, चलिए let me put in Nifty right now. Nifty 50 डालते हैं. Nifty 50 का चार्ट हमने अभी डाला है, and I'm going to put it on a 15-minute time frame. How many of you over here are intraday traders? How many of you are here intraday traders? कितने जन इंट्राडे ट्रेडर्स है यहां पर? Okay, are you an intraday trader? Lot of people, it looks like a lot of people are intraday trader. Okay, so you are intraday trader. Perfect, lovely. So let us just try and understand from intraday trading perspective now on a 15-minute chart. इतने छोटे टाइम फ्रेम पे हम एनालाइज कर रहे हैं वही कंसेप्ट को जो हमने किया था. यहां से मार्केट यहां पर गैप डाउन ओपन हुआ, समझते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड नाउ फ्रॉम दिस चार्ट इंट्राडे. दिस इज अ गैप. गैप का मतलब क्या है? गैप का मतलब होता है बिकॉज ऑफ सम न्यूज. कोई न्यूज है, कोई इवेंट है, या ग्लोबल मार्केट सेल ऑफ है. बिकॉज ऑफ सम न्यूज, कोई इवेंट या ग्लोबल मार्केट सेल ऑफ या कोई भी कारण से मार्केट गैप डाउन हुआ. गैप डाउन मतलब यहां पर क्लोज था 15,120. यहां पर ओपन कहां हुआ? इधर ओपन हुआ. देखिए ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है. अंडरस्टैंड दी ओपनिंग कैंडल, वेरी क्रूशियल. हाँ, ओपन कहां हुआ? बाजार ओपन यहां पर हुआ. क्लोज कहां हुआ? क्लोज यहां हुआ. विच मीन्स व्हाट? ओपन हुआ, सेलिंग आया, सेलिंग आने के बाद में बाइंग इमर्ज होके मार्केट ऊपर आके बंद हुआ. ओके, आर यू एबल टू हियर मी क्लियरली? Selling on that 15 minutes chart. This is a 15 minutes candle. Selling, then markets went up and closed. Okay, तो अगर आपने ये कैंडल देखा, if you have seen this candle, will you be bullish or will you be bearish? व्यू क्या होगा फिलहाल के लिए, अभी के लिए? इतना बड़ा, कैन आई से दिस इज लोअर हाई लोअर लो. यू आर बुलिश. रॉन्ग. आई विल टेल यू क्यों. कंसेप्ट ऑफ थर्ड कैंडल बॉस. यहां पे ट्रेंड क्या था? चलिए वापस से चलते. 3 मेथड, 3 स्टेप्स, 3 टेक्निक्स, 3 मेथड्स. रिपीट सेम स्टफ. ट्रेंड क्या है फिलहाल? ये क्योंकि आप इंट्राडे देख रहे हैं इसलिए आप ये नहीं देख रहे, आप जस्ट थोड़े से टाइम फ्रेम का देख रहे. ट्रेंड नीचे का है, ट्रेंड नीचे का है. नीचे के ट्रेंड में यहां पर पॉज हुआ, तो ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ. थर्ड कब होगा? टेल मी, थर्ड कब होगा? व्हेन यू सी इस हाइक को ब्रेक करके क्लोज करना चाहिए. सी आई एम थोड़ा सा ट्विक कर रहे मेथड को. ये एक कैंडल है,
ये डाउन ट्रेंड का कैंडल है। अगर मैंने इसके ऊपर क्लोज कर दिया, ये हाई के ऊपर, क्लोज इज ग्रेटर देन हाई, ये क्लोज हाई के ऊपर क्लोज, ये वाला क्लोज इधर है, ये जो क्लोज है ये प्रीवियस हाई के ऊपर हुआ क्या, ओपनिंग कैंडल के ऊपर। सो दिस इज एन ओपनिंग कैंडल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आई एम टॉकिंग अबाउट, ओपनिंग कैंडल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। टेल मी, जो ये थर्ड कैंडल बना, चलिए अगर आपको वो कंफ्यूज हो रहा है, सिंपल मैं पूछता हूं, थर्ड कैंडल में कंफर्मेशन मिलता है? टेल मी, इज दिस थिंग क्लियर? आर यू एबल टू गेट द कंफर्मेशन ऑन अ थर्ड कैंडल? लेट मी अगेन जूम इन मच। थर्ड कैंडल में यू विल गेट अ कंफर्मेशन, राइट? नाउ ओवर हियर इफ यू चेक, ये थर्ड कैंडल पॉजिटिव बना है कि नेगेटिव बना है, रेड है कि ग्रीन है? और इसने क्लोज प्रीवियस हाई के ऊपर किया क्या? नहीं। तो आप बाय करोगे क्या इस बाजार को? आप बाय करोगे? विल यू बाय दिस कैंडल? Will you buy? Because it has not closed above the high of the previous candle and this is a red candle, you will not buy. But what will you do as soon as this low is taken out? So range क्या मिल गया मुझे opening candle से? What is the range that I get on the opening candle? I get this as the range. Now let us see what is the value of this range. High is 14,907. Make a note. ये जो इधर हाई बना है that is 14,907, ये हाई। लो क्या है? मेक अ नोट। लो इज व्हाट? लेट अस जस्ट चेक। लो क्या है? ये ग्रीन कलर है। हाँ, ग्रीन कलर का लो क्या है? द रीजन आई एम एक्सप्लेनिंग इन द कलर इज बिकॉज आई वांट माय 10 year son to understand it, because he understands color. So I am telling you green and red. ग्रीन कलर का लो है 14,788, तो इधर मैंने लिख दिया 14,788। ये मुझे रेंज मिला। मुझे क्लोज चाहिए या तो 14,907 के ऊपर या तो 14,788 के नीचे। क्लियर है? ये रेंज ब्रेक करने के लिए पूरे के पूरे 1 घंटे तक, फॉर 1 hour मार्केट ट्रेडेड ओनली इन दिस रेंज ऑफ द कैंडल। ओके, नाउ दिस कैंडल as soon as, ये कैंडल या इसका नेक्स्ट कैंडल, ये कैंडल as soon as it closed below 14,788 you sell। समझिए आपने सेल किया 14,770 पे, सो आपका सेल प्राइस हो गया 14,770। स्टॉप लॉस क्या होगा? टारगेट नहीं है फिलहाल, टारगेट क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए। सो अगर मैंने इधर सेल किया है, मेरा प्रीवियस कैंडल का हाई क्या है? ये प्रीवियस कैंडल का हाई ये है, इसका हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए। व्हाट इज द हाई ऑफ दिस कैंडल? 14,806, तो मेरा स्टॉप लॉस हो गया 14,806 के ऊपर क्लोज चाहिए। हाँ, you understand this? I am not going to give this recording. You need to be very attentive to right now what we are doing. No WhatsApping, no phoning, no social mode. This is taking responsible action. अगर आप फोकस अभी नहीं कर पाएंगे तो आप बाद में मार्केट में फोकस नहीं कर पाएंगे। प्लीज फोकस करिए। I want to explain it to you in a very simple language. Again, I am repeating from the start. Opening candle 15 minutes. High is this, low is this. The concept of third candle, first is the trend is down. This is the second candle, the trend is paused. The third candle, we need to see a green candle closing above this high. So first
trend down. Second, trend paused. Third, close above previous candle high. 3 steps का concept समझ में आया? Are you able to get the concept? Basis of that you will enter the market. Now it did not do that, but it broke the low of the third candle, which means that I will sell below the low of this. Is this thing clear? 3 steps. Again, I am going to be sharing this across later on my Telegram channel, and I am also going to be ensuring you are going to get it on my Twitter. So ensure अगर आप Twitter पे नहीं है तो Twitter पे रहिए, क्योंकि ये सब चीजें सीखने मिलेगी. चलिए, for now, is this thing clear? कोई भी डाउट है क्या? See, I can continue to explain this unless you very clearly understand the concept. Let's move ahead. These are the 3 steps I follow. Once I have these 3 steps, I now will hold the short positions, which is this candle. So I will sell here. मेरा टारगेट कैसे डिराइव हुआ? ये पूरे कैंडल का जो रेंज है, ये पूरा रेंज बड़ा कैंडल था ना, ये बड़ा कैंडल का रेंज, which means the width. What is my target? My target is 14,907 से 14,788 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना पॉइंट्स मुझे मिला? नियरली 120 पॉइंट्स. मेरा टारगेट यहां से 120 पॉइंट्स लोअर है, तो मेरा टारगेट क्या हो गया? ओवरऑल टारगेट मेरा हो गया, इफ यू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दैट आई गेट 14,680 के आसपास का मेरा टारगेट आ गया. 680 नहीं, आई एम सॉरी, सो 660 के आसपास मेरा टारगेट आ गया. 14,660. नाउ वेयर इज 14,660? हम चार्ट पे मार्क कर देते हैं. 14,660 का है. लेट अस जस्ट मार्क इट ऑन द चार्ट. सो द लो इज, जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट सी दैट. 14,660 कहां पर आ रहा है मार्केट में? यहां पर. दिस इज 14,660. सो दैट्स वेयर माय टारगेट इज. ये कैंडल मेरा टारगेट है. ओके, विच मीन्स दैट मेरा स्टॉप लॉस कितना था? अगर मेरे को नुकसान होता था, आई वुड हैव लॉस्ट हाउ मच? आई वुड हैव लॉस्ट हाउ मच एवरीवन? 36 पॉइंट्स. अगर मुझे अभी प्रॉफिट हुआ है, आई एम गेनिंग हाउ मच? 120 points. Okay, which means that my risk is 36 is to 120, nearly 1 is to 3.8 risk reward हुआ कि नहीं हुआ? My nearly 1.3 1 is to 3.8 मतलब risk is this, reward is this. I'll again explain everything. Don't worry about it. Risk reward समझ में आया आपको? For people who got this concept, are you seeing this? How easy it is? बहुत सिंपल है. Okay, बहुत सिंपल है. Acharya is saying I am in the market from 2004 and type of simple guru is not there. Thank you very much, Acharya, for that wonderful wonderful words. You are simply superb, each one of you. Anshul is saying amazing risk reward. Fantastic, Anshul. Udit is saying fantastic approach. Chandrasekhar, wonderful. Glad. चलिए, जिसको नहीं समझा वो सोच रहे यार क्या हो गया, मैंने क्या मिस कर दिया, क्या नहीं हो गया. I'll again repeat step by step process very clearly on this chart again. Don't worry about it. सिंपल मैं वापस से आपको एक्सप्लेन करता हूं, क्लियर करते पूरे स्क्रीन. पहले समझते हैं
आइडियली कैसे होना चाहिए? ओके, आशुतोष इज सेइंग फैबुलस, थैंक यू वेरी मच, एंड पीपल ऑन द यूट्यूब are saying simply awesome, right? Wow, thank you. And people who are there on YouTube, ensure you click on that subscribe button right now and you click on that bell icon, because this webinar, and share button bhi hai wahan pe, share kariye. If you think you can still ask people to join in, click on that share button. Ravikant is saying awesome. चलिए, let's not spend time, नहीं तो लोग बोलेंगे यार मैं सेल्फ बूस्ट कर रहा हूँ. चलिए, let's just understand this again in a very simple way. I'm drawing something. Here. This is the candle. नहीं, ये थोड़ा सा नीचे बनाते हैं. ये कैंडल मैंने बनाया. Now, by the same logic, what is the trend? Step 1, bearish. Step 2, या candle 2, what is the candle? Pause. Step 3, third step में इसने high निकाला, but I need to see, this has taken out the high, but I need to see close above this high. ये high है, close कौन सा है इसका? ये है. नहीं, आई एम सो सॉरी, क्लोज इज रेड कैंडल है ना, तो क्लोज इज दिस. टेल मी, चलिए लॉजिक समझते हैं, साइंस समझते हैं. द लॉजिक ओवर हियर, द लॉजिक इज दिस अब जो इसने यहां पर, अगर आपको कभी भी लाइफ में डाउट हो ये कैंडल के बारे में, एक सिंपल मंत्र देता हूं मैं. आई एम गिविंग यू अ सिंपल मंत्र. थिंक someone who has shorted here, big player who has shorted, shorted या sold here, will he get nervous on this candle number 2? What do you think? Will he get nervous on candle number 2? He is making bloody 400 points यार, 300 points बन रहा है उसका. You think he is going to get nervous as of now? No. Do you think this third candle, will he get nervous? This is candle 2. This is third. Do you think on this third candle will he get nervous? No. He's still happy. He's making money. He's not nervous. He's not anxious. इधर nervous कौन है? एक इसके पहले वाले दिन में इतना ऊपर गया, इधर इतना नीचे आया. थिंक लॉजिक सोचो, साइंस क्या है, माइंड क्या है. नर्वस कौन है? पहले का ट्रेंड क्या था? ऊपर, मस्त बुलिश थे वो लोग, नर्वस नहीं थे. लेकिन यहां पर वो लोग सोच रहे अचानक से क्या हो गया. नाउ दे आर वेटिंग. अगर आप लॉन्ग होते तो सोचिए क्या करते. ये कैंडल पे आप सोचते यार थोड़ा सा रुक जाते, लेट्स जस्ट सी शायद गैप फिल हो जाए, राइट? If you are long, that is what you might have been thinking. If you are long anyways, that's what you think. What will you, because on hope you will think. Now what will you place your stop loss? चलो ये ग्रीन कैंडल बना, शांति पड़ी, इधर एक स्टॉप लॉस लगा देते डे लो पे. बराबर है, मतलब अगर डे लो निकला तो यार निकलना पड़ेगा, तो आपने डे लो का स्टॉप लॉस लगा दिया. लॉन्ग के माइंडसेट से सोच रहे आपको सेल करना है, लेकिन तो फिर इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये लो के नीचे हम सेल करेंगे, क्योंकि लॉन्ग वाले पैनिक होंगे और शॉर्ट वाले एंजॉय करेंगे. सो द लॉन्ग पीपल विल स्टार्ट पैनिकिंग बिलो दिस लो. सो कहना ही से मंदी वालों की मजा है और तेजी वाले घबराएंगे. तो जो घबराएगा वो नुकसान करेगा. मार्केट का फंडा वही है, जो घबरा गया वो नुकसान करेगा. इधर घबराएगा कौन? लॉन्ग वाले. तो नुकसान कौन करेगा? लॉन्ग वाले. आपको क्या करना है? सेल करना है.
कब सेल करना है? अगर ये कैंडल के नीचे जब लो ब्रेक होगा तब सेल करना है। तो सेल का स्ट्रेटेजी समझ में आया? इस कैंडल के लो के नीचे सेल करना है। स्टॉप लॉस क्या लगाना है? प्रीवियस कैंडल का हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है। तो सेल कहां किया मैंने? इधर किया। मेरा स्टॉप लॉस क्या हुआ? ये कैंडल का हाई हुआ। समझ में आया? इसलिए मुझे स्टॉप लॉस 36 पॉइंट्स का मिला। टारगेट कैसे मिला? ये जो रेंज पूरा बनाया, फर्स्ट कैंडल में ये रेंज बनाया, दिस रेंज गिव्स मी द टारगेट। ओके, दिस रेंज गिव्स मी द टारगेट। इज दिस थिंग क्लियर? ये रेंज को मैं अगर नीचे प्रोजेक्ट करूंगा तो मुझे टारगेट मिलेगा। सो दैट्स व्हाई आई गेट द टारगेट विच इज ऑन द डाउन साइड ऑफ 120 पॉइंट्स। इसमें दो टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। फर्स्ट टेक्निक, ये जैसे ही टारगेट आया आपने एक लॉट बुक कर दिया और सेकंड पोजीशन के लिए प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोज होगा तो आप एग्जिट करेंगे। टारगेट इतना विथ हुआ ना, इसको मेजर किया ना हमने, इसका मेजर करके नीचे प्रोजेक्ट किया ना, विथ ऑफ दिस फ्रॉम दिस ब्रेकआउट पॉइंट। ओके, सो आई गेट द टारगेट। नाउ यहां पर यू बुक हाफ, जो भी पोजीशन लिया है यू बुक हाफ। एंड सेकेंड पोजीशन के लिए क्या करना है? सेकेंड पोजीशन के लिए आपको प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए। सो क्लोज प्रीवियस हाई के ऊपर होगा तो आप एग्जिट करेंगे। प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज पे आप एग्जिट करेंगे। ओके, मतलब जब ग्रीन कैंडल बनेगा और प्रीवियस हाई निकाल देगा तब भी आप पोजीशन को एग्जिट करेंगे। ये पूरे के पूरे ट्रेंड में, इन दिस एंटायर ट्रेंड, not a single time, look at this magic, not a single time there was a close above the previous candle high until this candle, which means यहां से शुरू करते हैं, not a single 15 minute close, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर नहीं हुआ है। Not a single 15 minute close has happened above the previous candle high. कितना बड़ा ट्रेंड था वो? ये हाई क्या था? From the high of 15,173 till the low of 14,556. Can you someone do me a calculation and give it to me? 15,173 से 14,556 तक कितना पॉइंट्स बना? How many points did you get there? 15,173 से 14,556, nearly 600 points you got without one candle closing above previous candle high. Not one candle closing above previous candle high. 617 पॉइंट, और आप बाय करने की सोच रहे थे कि सेल करके पैसा कमाते थे फ्राइडे के दिन पे। बाद में क्या हुआ? लेटर ऑन, वंस दैट क्लोज्ड हैपन अबाउट द प्रीवियस हाई, प्रीवियस लो को ब्रेक किया क्या? प्रीवियस लो को ब्रेक किया क्या? कैंडल ने यहां ओपन हुआ, यहां क्लोज हुआ, प्रीवियस लो को के नीचे क्लोज हुआ क्या? प्रीवियस लो के नीचे क्लोज नहीं हुआ। एंड इसके बाद इसके लिए लास्ट के 1 घंटे में आपको बाइंग थी बाजार में। समझ में आया लॉजिक? इज दिस योर आहा मोमेंट कि बॉस इतना सिंपल चीज सामने था? कैंडलस्टिक आई हैव बीन यूजिंग फॉर सो लॉन्ग, बट आई नेवर लुक्ड एट इट इन सच सिंपल साइंटिफिक अप्रोच ऑफ मार्केट्स। नो ज्ञान, प्योर science is what I call these things. Event,
news, bond deals, this, that, all those things. Cancel that out. Cancel everything what everyone is saying. Okay, Rohit is saying बहुत ही आसान. That's fantastic, right? सिंपल है यार. लोगों ने क्या कर दिया है मालूम है? मैं आपकी परिस्थिति बताऊं. I'll tell you the state of your mind. There are so many people who are conducting these kind of webinars. So many claim I am a technical analyst. I can make 100% accuracy. First of all, I don't know what is 100%. Okay, then that's the state of confusion with people. I tell you one thing. Trust कैसे करना है किसी के ऊपर? Is that person a chartered market technician? I am a CMT, which is from US, a technical analysis degree. Okay, technical analysis degree. I am a CMT. I have written a book published in London and in India. I have nearly conducted more than 400 webinars. Yeah, usse bhi zyada. I have asked my team to give me the count so that I know the episodes, how many I have done. Maybe I have more than 11,000 subscribers on YouTube right now. More than that. So these things are showing, yeah, something is working. I'm sharing it across, and I can do anything and everything. So tell me, do you think this is interesting with you? Okay, is this thing interesting? Say me a big yes if you are finding it fabulous, classic. You know, that helps me to understand, यार हम right track पे है कि नहीं है. Now we will move on to an option chart once you answer this. Is this fabulous? Okay, Gajab is what someone is saying. Thank you very much. Hemant Khale, you are also here. Fantastic, amazing, super se bhi upar, miracle, outstanding. Okay, Kaushik, I'll answer your question. Don't worry about it. Please pause for a moment. Let me have a glass of water. थोड़ा सा पानी पी लेते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. Live Hari sir, aha moment, fantabulous. Okay, lovely. चलिए, class apart. Thank you. सचिन इज सेइंग ये सब रॉकेट साइंस समझते थे. ये रॉकेट साइंस नहीं है. ये इंस्टीट्यूशंस वे ऑफ थॉट प्रोसेस है. हाउ डू आई नो दिस इंस्टीट्यूशंस कैसे सोचते हैं? बिकॉज आई हैव वर्कड विद देम. I know how these people think. I know how these people trade. I know how these people leverage. And I have my time value. You think from that perspective. I know these people inside out. And that's what I am doing it right now with you. Okay. Rupanjan is amazing. Good teachers explain, brilliant teachers inspires, right? Best teachers. Thank you very much. चलिए, let's move on. और ऑप्शन के चार्ट पे यही चीज को हम अप्लाई करके कोशिश करेंगे. You can say this price action kind of a scenario. You can say a lot of those things also. We'll apply Bollinger Bands also on an option chart. So just give me one moment. Let me open up another screen where I can show you an option chart. Okay, let me just do that. I'm going to do in a second. Meanwhile, let me just open up the chart and show it to you. I'm going to show that on a chart and option का चार्ट कौन सा स्ट्राइक लेना है, क्यों लेना है, कब लेना है, कितना लेना है, सब चीज देखेंगे हम. फिलहाल तो हम सिंपल सा एक कंसेप्ट अप्लाई करेंगे चार्ट के ऊपर एंड वी विल ट्राई एंड सी दैट. मैं स्क्रीन शेयर करता हूं. आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन अगेन with you. So let me just do that. Are you able to see my screen? Okay, fantastic. You are able to see the screen. Fantastic now. This you can apply on a 15 minutes chart. So I think there was a question for a 15 minutes or an hourly or something like that. You can apply it across. So you can apply it on a 15 or an hourly or any of these charts. Does not matter. You can easily apply this across the time frame and it will work for you. Okay, it's like a magic. Let's just move ahead now. And let us just try and see what are we
seeing here. So this is Nifty. I'm going to take Nifty ka close is, if you are an option seller. Option seller, there are two things in option. I'm not going to explain you know what is a call or a put. उतना टाइम नहीं है फिलहाल, वो हम बाद में कभी करेंगे. In the other paid webinars which I conduct, I'll do that. Option seller में what we want to see? We want to see कि फिलहाल ट्रेंड क्या है. तो पहले निफ्टी का एक ट्रेंड समझ लेते हैं, फिर हम ऑप्शन का ट्रेंड समझेंगे. निफ्टी के ट्रेंड में फिलहाल फॉर नाउ, एंड देखिए ये सब साइंस प्रोबेबिलिटी है, सर्टेनिटी नहीं है. मंडे क्या होगा वो देखना पड़ेगा. ओवरऑल ट्रेंड में क्या मैं बोल सकता हूं, अभी जो आपने कंसेप्ट किया वही लॉजिक मैं आपको पूछ रहा हूं. ओवर हियर कैन यू सी दिस कैंडल? यहां के कैंडल में सबसे बड़ा ग्रीन कैंडल था. कैन आई से दैट? सो इंस्टीट्यूशन बायर्स, इंस्टीट्यूशंस का मतलब हाई, lot of leveraged people bought here. Okay, over here. ये मूव करने पहले एक प्रसाद ने बहुत ही अच्छा कुछ लिखा. आई थॉट आई जस्ट रीड इट आउट. Sherlock Holmes said the world is full of obvious things which nobody by chance ever observes. That's a brilliant saying. Likewise, we are not observing the charts thought the chart is full of obvious information. You are teaching us that to pro bono. Thank you. That's a brilliant Prasad. That really appreciate that comment. Really appreciate. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर what I am trying to do is, this is where people bought money. Now when the market started coming down, they will not be still that much of nervous because they might have made a lot of money. Then it again went up and came here. But when there is a gap down, gap दिख रहा है ये? Can I say now these people are nervous because we saw a big move on the downside, and that is the reason the overall trend of the market now is फिलहाल के लिए lower high or lower low बना है. Can I say that? If you understand candlestick, you will also call this as island reversal. We are not getting into all concepts of candlestick. We are only understanding the simple concept of candlestick now. Not all, because उसके लिए time चाहिए. उसके लिए we are conducting Master of Technical Analysis program, in which I will also show you Master of Technical Analysis program season 2, which we have launched, is going to happen in April first week. I will also show you ये जो institutions ने buy किया है ना, यहाँ कितना buy किया उन्होंने वो भी मैं आपको बताऊंगा. This is like I am going to bring them naked in front of you, what they are doing behind the scenes by looking at the charts and volumes. Can you think? Can you beat that? वो कुछ भी छुपाने की कोशिश करे लेकिन वॉल्यूम तो नहीं छुपा सकते ना. Volume, we will look at volume profiling in Master of Technical Analysis program in first week of April, in which I will explain you what these institutions are doing behind the scenes. And why I know that? I have worked with them. I know what they do. So, and pure charts, no insider info boss, ऐसा मेरे पास कुछ है भी नहीं. Pure charts and volume profile, looking at the charts. चलिए. Now over here there is a lower high and a lower low. तो ट्रेंड नीचे का है, क्लियर. आइलैंड रिवर्सल एक कंसेप्ट होता है कैंडलस्टिक में, नीचे का है, क्लियर. गैप, क्लियर. नाउ वन थिंग इज, ये जो मैं आप देख रहे हैं, ये लाइन जो आपको दिख रहा है, दिस अपर लाइन, दिस लोअर लाइन एंड दिस मिडल लाइन. द अपर लाइन, द लोअर लाइन एंड दिस मिडल लाइन. This middle line is known as a moving average.
The upper line is the above end of the band. This is known as an upper Bollinger Band. For now, you don't have to understand Bollinger Band kya hai, simply plot it. So this is known as an upper Bollinger Band. Lower end of the line is known as a lower Bollinger Band. Now you have an upper Bollinger Band and you have a lower Bollinger Band, which is applied on a Nifty spot chart for now. If you are looking at this, you can clearly see that the upper Bollinger Band, can I say price is upper band के पास से reverse हो रहा है बार बार, and can I say price is lower band के पास या middle of the band के पास से support ले रहा है. Clear है? So middle band is support या demand zone, या यहाँ पे तेजी करने वाले बाय करने लग जाते हैं. लोअर बैंड भी सपोर्ट है. अगर सपोर्ट के नीचे आया तो वही चीज रेजिस्टेंस हो जाती है. रेजिस्टेंस मतलब सप्लाई आ जाता है. अगर आपको बैंड नहीं समझ में आया, कोई डोंट वरी यार, कैंडल स्टिक भी बहुत होता है अगर वो ठीक से समझा तो. फॉर नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज, अपर ऑफ द बैंड आता है तो आपको बाय नहीं करना है, लोअर एंड ऑफ द बैंड आता है तो आपको सेल नहीं करना है. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग फ्रॉम अ पोजिशनल ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव. अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस अभी लोअर बैंड के पास में आ रहा है, तो मतलब फिलहाल अगर आपको सेल करना है तो आपको पुल बैक पे सेल करना पड़ेगा. क्लियर है? आई एम अगेन रिपीटिंग, सिंस प्राइसेस आर कमिंग नियर द बैंड, टेल मी, विल यू बाय दिस मार्केट or will you still look for selling this market? Will you buy this market or are you still looking for selling this specific market? You are not buying. भाई क्यों खरीदोगे? लॉजिक क्या था? कैंडल बैंड के बेसिस पे बाय नहीं करने. देखिए ये मिस्टेक सब करते हैं. आई एम अगेन रिपीटिंग, यू वांट टू बी डिफरेंट टाइप ऑफ अ ट्रेडर, नॉट व्हाट एवरीवन डज. बैंड के लो पे बाय नहीं करना है. बाय कब करना है? जब भी ऐसा कैंडल बनेगा तब बाय करेंगे ना, फिलहाल नहीं करेंगे. कब बाय किया हमने? जब भी ये कैंडल का हाई निकाला तो बाय किया ना. मतलब अगर आपने बजट डे पे होता तो आप 14,000 पे बाय करते थे. सोचिए, यू वुड हैव बॉट एट 14,000 लेवल्स फॉर द ट्रेंड टुवर्ड्स 15,400. ओके, सो यू वुड हैव नॉट बॉट एट दिस कैंडल. थर्ड कैंडल का कंसेप्ट मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं. अगेन, 3 मेथड्स, 3 स्टेप्स, डोंट फॉरगेट दिस. फर्स्ट स्टेप, ट्रेंड इज डाउन. फर्स्ट स्टेप, trend is down. Second step, pause. Second step क्या है? Pause. Third step, bullish कैंडल बना, ग्रीन, जो हाई निकाला. थर्ड स्टेप क्या है? कैंडल का कलर क्या है? Green. यस, हाई निकाला. दैट्स द थर्ड स्टेप, विच मीन्स यहां आप बाय करेंगे. क्लियर है? सेम स्टफ हियर. स्टेप 1 रेड. स्टेप 2 पॉज हुआ है अभी तक? नहीं, पॉज अभी तक नहीं हुआ है. when will you see a pause? When you see a bottoming reversal pattern from here. Let bulls defend their territory. तेजी वालों को अपनी पावर तो प्रूव करने दो यार. Let them defend the territory. यहां पे कोई पैटर्न बनाने दो and then मंदी वाले बोलेंगे यार यहां कुछ तो गड़बड़ है. अभी तक वो नर्वस नहीं होंगे. They will not get nervous. They will say कुछ गड़बड़ है. नर्वस कब होंगे? जब ये होगा. Now they will say get out, this is the candle, then you buy, because it is bouncing from the lower Bollinger Band and on the upside. After one step, second step, the third step. Clear? समझा Bollinger Bands का concept with candlestick now? लेकिन सपोज मंडे को वापस से नीचे गया, थोड़ा सा ऊपर आया और फिर नीचे गया, बैंड के भी नीचे गया,
नाउ यू विल बी लाइक पुल बैक है एंड नीचे का रेड कैंडल है, पॉज भी नहीं है, सेल ऑन राइस, सेल ऑन राइस, सेल ऑन राइस। क्लियर है? सेल ऑन राइस कहां पर? आवरली चार्ट पे जाएंगे। डिफॉल्ट सेटिंग है, मैंने देखा भी नहीं क्या है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। सी मेरे को भी बहुत मेहनत करने की आदत नहीं है, जो सिंपल है वो रखता हूं, सिंपल कंसेप्ट से हमें चेक करके ट्रेड करना है। अगर कोई सोचता है कि ट्रेडिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें, नहीं, सिंपल है, इजी है। लेकिन कोई सोचता है कि पैसा ऐसे ही बन जाएगा बिना कुछ किए, घर बैठे बैठे, नहीं बनेगा। यू हैव टू टेक दैट स्टेप्स, यू हैव टू टेक दैट एक्शन। ठीक है? सो नाउ you know that pullback पे you have to sell. If you have to look at that, now strike price कैसे select करना है? You want to know the secret of selecting a strike price? I'm going to tell you now. Option write करने के लिए strike price कैसे select करना है? I'll tell you. Look at this chart. Where do you think sellers will get nervous? ये कैंडल के हाई के ऊपर, बैंड के बीच के ऊपर सेलर्स नर्वस हो जाएंगे। हाई कितना है? 15,920। 15,920 के ऊपर, सॉरी 14,920, 14,920, above that 14,920, can I say the sellers will start getting nervous? I want you to tell me and answer me, think about it. Do you think that the sellers will start getting nervous about 14,920 level? Yes or no? Yes or no? Will they get nervous? Yes. Which means you have to give little leeway about that 15,000 का level. So can I say, if I want to write an option, I need to select a strike price where the sellers will get nervous. And that's why I'll select a strike price of 15,000 to 15,100 of strike. Why 15,100? Just giving little leeway. Because वहां तक आ गया तो sellers will be big time running. Which means for now, I am going to write call option. I'm going to sell call option either of 15,000 या 15,100 के strike price का. Is this thing clear? That's how I'm selecting a call option to write. So 15,000 का call option देखते हैं निफ्टी पे, coming expiry पे. Okay, 15,000 call. If I put this 15,000 call for the coming expiry, let me just put that and share it on the chart with you. Just give me a moment. I'm going to simply set the tone for you. Nifty 15,000 to 15,000 call option. I'm just going to be setting that for 4th of March, and I'm going to be sharing that chart across. I'm going to be sharing that chart across just in a second with each one of you. Okay, just 1 second, and I will share that chart across with you. एक ही सेकंड में मैं शेयर कर रहा हूं। 15,000 का कहां गया? स्टॉक यहां पर है। ओके, वेयर इज द चार्ट? आर यू एबल टू सी माय चार्ट with a 15,000 4th March strike price? Are you able to see that? Okay, I think आपको दूसरा स्क्रीन दिख रहा है. Let me share that screen with you. Just 1 second. ये रहा. Now you can see. Okay, now you can see. 15,000 strike price of call option, 4th March expiry. कितना रुपीस चल रहा है वो? 46.85 रुपीस चल रहा है. आप इसको बाय नहीं करेंगे. देखिए, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय नहीं करना है. पैसा नहीं बनेगा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय करके. आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में बाय करके पैसा नहीं बनता है. आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को सेल करके पैसा बनता है. ऑप्शन में बाय करके पैसा कमाना है तो आपको एट द मनी या इन द मनी ऑप्शन बाय करके पैसा कमाना है. ओके, क्लियर है? नाउ 15,000 का मैंने सिलेक्ट किया. इसके बाद में व्हाट वी हैव टू डू?
वी सिंपली हैव टू एंश्योर दैट हमें इसे सेल करके पैसा कमाना। अभी इस चार्ट को देखो आप, सिंपल चार्ट को सेम लॉजिक अप्लाई करते हैं हम। प्राइसेस फिलहाल यहां से इफ यू लुक एट दिस कैंडल्स, मैं बॉलिंगर बैंड एक बार निकाल देता हूं कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए। लुक एट द कैंडल, सेम लॉजिक, फॉरगेट दैट ये ऑप्शन है कि कुछ भी है, थीटा गामा वेगा दिस दैट ऑल सर्कस, लीव इट असाइड, सिंपली लुक एट दिस चार्ट। व्हाट इज द ट्रेंड? ये 15 मिनट चार्ट है, दिस इज अ 15 मिनट चार्ट। व्हाट इज द ट्रेंड? डाउन। The 15-minute chart trend is down. Now, if you're looking at this chart, in this downtrend, will you make money by selling or buying this specific instrument? Selling. Sell कहां करेंगे? देखिए ध्यान से, observe very closely. Not a single candle has closed. Not a single candle has closed until this point above the high. This was the first point जहां पर close हुआ above the high. Trend was down. Trend was down. There was a pause in this zone. ये zone दिखा? There was a pause in the zone. And then as soon as this was taken out on the downside, sell again. This was a sell again. Imagine, Nifty was going up. Think, Nifty rallied in past last 30 minutes of Friday, Nifty rallied. But option, call option still going down. Can you understand this? If that is the case, which means यार निफ्टी ऊपर जाता है तो भी पैसा बन रहा है, निफ्टी नीचे जाता है तो भी पैसा बन रहा है। मतलब क्या है, ऑप्शन बाय करने से ज्यादा ऑप्शन सेल करके पैसा कमाना इजी है कि नहीं? लेकिन बिफोर आई कंक्लूड, यू नीड टू बी श्योर द रिस्क दैट यू हैव इज हाई। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हैं ट्रेड लेते ही, इफ यू आर नॉट एबल टू प्लेस द स्टॉप लॉस एज सून एज यू टेक द ट्रेड, you will never sell option. As soon as you sell option, place the stop loss. Where do you place the stop loss? Bollinger bands apply करो, band के ऊपर का end stop loss लगा दो. Is this thing clear? As soon as you sell or short this option, you will place a stop loss at the upper end of the Bollinger band. यहां पर सेल करना है, अपर एंड ऑफ द बॉलिंगर बैंड पे स्टॉप लॉस लगाना है जो यहां पर होगा, एंड इसको जीरो तक जाने के लिए राइड करना है. कैन यू डू दिस सिंपल एक्सरसाइज फॉर मी प्लीज एंड मेक अ लॉट ऑफ मनी? इमेजिन फ्रॉम दैट लेवल, ये कौन सा लेवल है? अराउंड 300, अराउंड, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, 250 से 300 तक एक भी बार यहां तक, okay, this level would have been somewhere around 60. Not a single time you made from 300 points to 60 points by selling this instrument. चलो नहीं बनाया, लेट हो गए, यहां पर भी अगर सेल किया, you are still making money despite of Nifty going up. And people are talking about multi-bagger. This is the amazing multi-bagger for you if you can do that. So when to buy the put? Do you also want to know the trick of buying a put? You don't want to know the trick of buying a put and make money? ऑप्शन में जानना है आपको? लेकिन यार टाइम कंस्ट्रेंट है, तो अगर मैं बोलूं कि ये टेक्निक इतनी सिंपल तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन की है, डोंट यू वांट टू लर्न द साइंस ऑफ बाइंग ऑप्शन एंड मेकिंग मनी? Is this a very classic way of looking at candlestick on an option chart without knowing theta, gamma, vega, this and that?
सिंपल कैंडल स्टिक बॉलिंगर बैंड अप्लाई करके कितने जन चाहते हैं सीखना ये मेथड्स को जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू वांट्स टू लर्न दिस काइंड ऑफ मेथड that we are discussing right now with each one of you? You can say, and so far, how is this session? Santosh is saying, I'll die to learn. Okay, fantastic. So how is this session so far? I'm just typing in, how is the session so far? You want to be a part of this institutional insight of trading that I have with me. If you want to be a part of this, then I would suggest, okay, okay, let me just pause my screen for now and let me come online. Let me pause my screen for now and let me just come online and explain these simple things. So how did you find the session so far? So I want an honest view. I want an honest view with each one of you. How did you find the session so far? How was the session? Don't you think people see what is my mission? What do I want to achieve? I have put in lot of hard work. 15 years, 20 years of hard work. Mera hard work, my research. I have taken lot of losses like I'm like every one of you. Okay, I'm like every one of you over here. So you can see that's my son who is running out now. So he was with me attending that session. He simply loved it. Okay, I put so much of hard work for so much of time. इतना research किया, इतना time value. यार मेरे time का भी तो value है कि नहीं है? You think some value I have of my time. So the session which we are going to conduct is Master of Technical Analysis Season 2, which we are launching for the very first time. Master of Technical Analysis Season 2, for the very first time we are launching it here. And Master of Waves program we are launching. So Master of Technical Analysis में होगा क्या? Candlestick, ऑप्शन को बाय करके पैसा कैसे कमाना है? Bollinger Bands, volume profile for the very first time. I am going to be doing this volume profile. मतलब वो जो बजट डे था ना, वहां पे इंस्टीट्यूशंस ने कितना पोजीशंस क्रिएट किया है और ऊपर के वक्त कितना पोजीशंस ऑफलोड भी किया है, वो साइंस में आपको बताने वाला हूं. क्योंकि अगर मैथ ऐड होता है कि वहां उन्होंने 100 करोड़ का पोजीशन क्रिएट किया, ऊपर के वक्त 90 करोड़ का पोजीशन ऑफलोड कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने पैसा कमाया, दे आर गेट आउट, टाइम टू शॉर्ट. लेकिन उन्होंने 100 सीआर का पोजीशन लिया, लेकिन पोजीशन स्क्वायर ऑफ खाली 50 सीआर का. क्या मतलब? दे आर स्टिल इन द गेम. Okay, someone is saying, Arun is saying you are just like Lord Krishna teaching Gita of trading. Thank you, Arun. That's like fabulous. Thank you very much. Really loved it. So let me now explain you the concept of Master of Technical Analysis program. अगर ये 2 घंटा आपको लगता है यार क्या फायदा, इतने लोग वेबिनार्स कर रहे हैं और कर लेंगे, फ्री में कर लेंगे. सी, देयर इज नो फ्री लंच. टू बी ऑनेस्ट, देयर इज अ वैल्यू फॉर माय टाइम, for my hard work, for my research. I've seen it. I've paid a lot of amount. I've spent lakhs of rupees to be here where I am. If you are only thinking कि यार ये कोर्स करके फायदा होगा नहीं होगा, you might just end up only thinking. तो कोर्स एक्चुअली है क्या? Let me just explain you first. So let me just get there on my slide right now. And जो लोग impatient है, जो बोल रहे यार हो गया बस अभी, they will never make money in the market. You need to sit back, you need to relax, you need to know patience is rewarded in the market. If you are not patient, you will never ever make money in this market. Okay, so let me now explain you about the various programs which is going to come up on 10th and 11th of April. Let me just share across my screen. Give me a moment, please. Do you want to know more about that program? Okay, and why I am so gung-ho upon that program? Because I'm sharing across what the institutions do at that level to you right now in a very simple fashion. So are you able to see my screen now? What you are seeing here is the program which is Master of Technical Analysis
season 2. This is not going to be same as the earlier. So जिसने मास्टर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सीजन 1 अटेंड किया है वो अलग है, थोड़ा कंसेप्ट ओवरलैप होगा, लेकिन दिस सीजन 2 is on 10th and 11th of April online. कोविड के कारण we are not doing it offline. This is going to be there online session है and this is going to be amazing. So पहले मैं इसको एक्सप्लेन करने के पहले I just want to know, did you learn in something in these 2 hours of session? Did you learn something in these 2 hours of session? It's so good, right? Exactly. If you learn, then this is going to be for 12 hours. 12 hours आप मेरे साथ रहेंगे, 12 घंटे 2 दिन ये सेशन में आप मेरे साथ रहेंगे. इसके बाद में आपको इस सेशन की रिकॉर्डिंग दी जाएगी. ओके, you will get the recording of the session for 10 days. So don't worry. You will have the option of seeing it again and again, again and again. You know the best part is what online का. आप अकेले तो देख रहे नहीं है, साथ में आपके फ्रेंड को बोलिए साथ में देखने के लिए, आपके कोई रिलेटिव को बोलिए, आपके किड्स को बोलिए. When I teach, I ask people to be there. They learn also. You can do that. Okay. Ask your relatives, ask your kids to be seeing this session. Yeah, why not to groom them? So you will get that over there and you can ask people to attend it parallelly along with you. इसमें वॉल्यूम प्रोफाइल करेंगे हम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. कैंडलस्टिक के और पैटर्न्स जो मैंने आज तो खाली 2-3 पैटर्न बताए वो करेंगे. इंडिकेटर्स के ऊपर हम फोकस करेंगे. ओके, सो ये तो खाली मैं एग्जांपल दे रहा हूं. दिस विल बी मिक्सचर ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी. See, people who think that this is going to be I can't do it because in Hindi, they are just finding out reasons. This is going to be English and Hindi. अगर ये सेशन आपको कुछ समझ में आया, and that session I'm sure you will understand it. People will say I don't have time. People will say I can't do this because of this reason, that reason. They will say I have lost lot of money, I can't pay. People will say that जिनको स्टेप लेना ही नहीं है, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, जिनको एक्शन नहीं लेना है, those people will always keep doing that. But people who wants to learn will definitely learn, will definitely get that. So that's master of technical analysis. Master of waves. अगर आपको फोरकास्ट करना है कि 1 साल बाद क्या होगा मार्केट का, 2 दिन बाद निफ्टी का क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, all of these things is forecasting. डेट, कौन से डेट पे मार्केट रिवर्स होगा, कौन से टाइम पे, 12 बजे 12 p.m. You will not believe that. In fact, on CNBC, one of the days I said on a Monday post 12 market will rally. You require some very sensible approach to say that. If you want to do that, that's the Master of Waves program. इसमें we will cover Elliott wave, okay, in very detail, Neo wave, and you will have the access. This is also season 2. It's going to be different. So people who have already attended season 1 can attend this season 2 now, because the focus of this is options buying that we are going to do, options selling, making big money is what we are going to focus on, Master of Waves. And mentorship. So this both program is known as BMW, Become Market Wizard, right? BMW चाहिए कि नहीं? I'm sitting at my resort at Cloud9 Hills Resort in Lonavala. That's my resort. I'm sitting there right now. That's financial freedom for me. Yaar. I can sit here, conduct these programs. I can trade from here. 15 मिनट का टाइम है, कर सकते हो. 2 घंटा है, कर सकते हो. Mentorship is the program. It's going to be there for starting on 13th of March. Okay. It will cover my MO. So इसमें क्या क्या मिलेगा मालूम है आपको? MOTA season 1 का recording, BMW season 1 complete season 1 का recording, BMW season 2 live sessions, every Saturday, one on one session नहीं है, but very limited batch. This is the mentorship which is going to be happening starting on 13th of March. Each trader का I will understand their drawbacks, their apprehensions, क्यों पैसा नहीं बन रहा है, कहाँ stop loss है. So all of these things समझ में आया ये? चलिए आगे बढ़ते हैं. Now I'll explain you
further how to get registered for this program. इतना समझा, mentorship covers anything and everything. Application, follow up, post 4 months, you can get in touch with me, you can speak with me. अपना पर्सनल इश्यूज ट्रेडिंग में क्या है वो डिस्कस कर सकते हैं. पर्सनल इश्यूज ट्रेडिंग का, लाइफ का भी है, वी कैन टॉक अबाउट इट, आई डोंट माइंड. Mentees tell this as a life transformation for them who are a part of this program. So they say it's a life transformation, not a trader transformation, life transformation for mentorship. लेकिन अगर नहीं करना, you can do BMW program. Nilesh Pawar is here, who calls this as a life transformation program for him. So that's what they do. Okay, let's just go and understand now the current BMW and इसका कैसे करना है हमें. चलिए आगे बढ़ते हैं. The revised pricing for the Master of Technical Analysis Season 2 is 49,000. Okay, for today, if you register today for this program, only if you register today for this program, the pricing is going to be 19,500 plus GST. Okay, you need to add GST to that. Master of Technical Analysis Season 2 का pricing is 19,500. If my team can share across the link, people can start registering. Simple है, आपको credit card से आप pay कर सकते हो. You don't really have to have money in the account. You can simply go and pay using a card. Master of Waves Season 2 revised pricing is 49,000. But today, if you are registering, trust me, offer valued only for today is 19,500. This price of 19,500 you will not get it later. If you want, you think कि यार आपको डेट भी फोरकास्ट करना है, एलियट वेव भी समझना है, सिंपल भाषा में. सी यू वुड थिंक यार बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे नॉलेज नहीं है, मुझे ये नहीं है. यू माइट कीप थिंकिंग फॉर द रीजंस. लेकिन अगर आप एक्शन लेंगे, स्टेप लेंगे, इट्स माय गारंटी योर एक्यूरेसी विल इंक्रीज. बट आई विल नॉट से दैट यू विल मेक 100% एक्यूरेसी. तो हो ही नहीं सकता यार. अगर कोई बोलता है कि आप ऐसे ही बैठे बैठे रिच हो जाओगे, यू विल बी filthy rich by sitting at one place, he is faking it. I am telling you, you need to do certain things, you need to take that steps, and you need to move ahead. But simple rakhna hai, it's not complex. If you register for both of these programs today, which is worth 98,000, you will get it for 32 only plus GST. You can simply do that. And if you do this course, trust me, you will not have to do any other thing. Okay, you can simply do trading even on Master of Technical Analysis. But if you want to forecast time, cycles देखना है, how the cycles work in the market, low कब बनने वाला है, top कब बनेगा, if you want to forecast that, then Master of Waves program is for you. And if you do this both, that's like a brilliant thing, right? If you do both of these programs, it's amazing learning. And mentorship pricing, we are revising. Earlier it was different. Mentorship pricing is going to end, it is 2,80,000. But if you register today, it is 1,20,000 right now if you are registering the mentorship program. I'm again repeating, what else you get? Complete hand holding, BMW Season 1, BMW Season 2. I will also be giving you along with that 5 bonus videos. ओके, आज का जो वेबिनार था उसके टाइप का 5 बोनस वीडियोस आपको मिलेगा. इचिमोको क्लाउड पे आपको मिलेगा, कैंडलस्टिक पे, प्राइस एक्शन पे, लॉट ऑफ दोस 5 बोनस वीडियोस. यू विल गेट इट एज सून एज यू रजिस्टर. You get access to me directly through a private Telegram group. This is going to be a lifetime access on that Telegram. I'm going to be a part of it. You are going to be a part of it. Trading Gurukul platform पे access आपको मिलेगा, lifetime access for certain videos, which is going to be a lifetime access. Networking, like-minded people will be there along with you. What you only have to do, you have to take that step forward. So that's a mentorship program that I'm talking about. If up to you whether and how to register for this program, you simply have to go on the link which is shared across by my colleague right now and simply go and register there. You can ask your relative to be a part of it, you can ask your friends to be a part of it. Live program hai, online program hai, these are live and online program, so you can do that.
You can simply register and ensure that everyone learns and becomes a wonderful trader is what we want to do by these programs. Okay. And as many of you are saying, this is a life changing session. अगर 1.5 घंटे में आपको इतना सीखने मिल सकता है, imagine your learning will be how much when you are possibly looking, you are staying with me for such a long time. So guys, I'm just taking a very quick poll for people who are here with me. Do you want to be with me for these sessions, or you don't want to be with me for these sessions? Do you want to become a disciplined trader, have an amazing time, and want to learn about this program? Okay. Do you want to be a part of this program? Here is a poll in front of you right now, that if you want to be a part, simply go and participate in this poll that is there, which is launched right now. Just be a part of it. And if you want to be pay, and the other kuch query hai mentorship pe, my team will call you and explain you today. And if you want to be simply learning about, you can simply go to the link, pay you link, and directly start registering. I'm telling you, this offer is valid only for today. Khali aaj ke din hai. It's not going to be available, not going to be offered for any tomorrow. So Pooja is there. She is already registered for the mentorship. Uh, Rohit is saying, I'm subscribed for lifetime of mentorship program. It's just life-changing course for me. Fantastic. Santosh is saying, any eminent for mentorship. I'm not sure. You can register. My team will call you, Santosh. Don't worry about it. Just ensure you are a part of this program. You are a part of this entire curriculum, and people who are there on the YouTube, and those you can simply ensure, go to that pay you link and ensure you are a part of that. अगर आपको लगता है कि ये प्रोग्राम करके क्या होगा, क्या फायदा होगा, क्या नहीं होगा, you can simply keep on thinking that, and you will never ever possibly do anything. So understand one thing. I'm again repeating one thing very clearly. There is a time value for me. I've taken years. I've spent lakhs of money to get where I am right now. So if you have reasons, time nahi hai, paisa nahi hai, ye nahi hai, wo nahi hai, patience nahi hai, trust me, it's not what you should be then doing. Reasons hai to kuch nahi hoga. This thing is priceless. Trust me. Ye experience and knowledge is priceless, if you ask me. And it's not a cost. कॉस्ट कहाँ होता है? जब आप कुछ स्पेंड करते हैं, क्लोथ्स ले रहे, ये कर रहे, मूवी जा रहे, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट. It's a return on your investment, a lifetime opportunity. It's a knowledge. So it's not a cost. Okay. I'm going to just simply end the poll. It's not a cost. It's a lifetime of experience that you get, and you can trade. Whether you want to become a full-time trader, you want to trade only 15 minutes a day, or you want to do it for a lot of more time, you can all do those things. So this is season 2. For the very first time, I'm going to showcase how institutions are making money in trading the market. So join me for this program, Master of Technical Analysis, or join me for the program of Master of Waves, BMW, or join me for the mentorship for a life transformation. It's up to you how you want to do it. And but what I want is, don't you think मार्केट इतना ऊपर गया, पैसा नहीं कमाया, मार्केट अगर इतना गिरा है उसमें भी पैसा नहीं कमा रहे, तो कब कमाओगे यार? इतना वोलेटिलिटी में अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो कंसिस्टेंटली, कमाया लॉस हो गया, कमाया लॉस हो गया, देन यू आर नॉट हेडिंग एनीवेयर. यू आर नॉट हेडिंग एनीवेयर इन लाइफ. You need to ensure you are not going ahead and coming back. You just want to go ahead and ahead. That's what I wanted to talk about this. And this is about the mentorship program. This is the number 9920422202. If you have any queries, doubts, you can always reach out to us on this number. For now, and I want you to be taking actions. So I can see so many of you are now registering. Thank you very much, which I can see. Pooja is saying, must, it's a lifetime opportunity. Take it up, everyone. Think about losses you have made. This will bring back the losses. I have taken up the decision. She has joined the mentorship 2021. Pooja, really appreciate. Thank you very much for Pooja being here and encouraging people, because there are so many of them who are faking it. So लोगों को विश्वास नहीं होता है, but you have taken that step forward, and that's
a very important thing that you did, Pooja, by taking that step forward. So here I am. This is Ashish Kyal. I hope I have all answered your queries and doubts and about this session. Was this session amazing for you? Did you had that aha moment? Yes, I can do it. Did you think it was super brilliant and awesome session, right? Uh, then take that step forward, right? Why do you want to step and stop here? Why not move that step forward? Take actions. Once you take action, I'm sure the hand holding will happen. What will be in hand holding? Hand holding matlab we will interact. I will discuss with you what is your weakness as a trader, what is the strength, what is risk management, money management. हैंड होल्डिंग मीन्स कहां पर आप नुकसान कर रहे हैं, आपका पैसा कहीं क्यों नहीं बन पा रहा है, अगर नहीं बन पा रहा है, अगर आप बहुत पैसा कमा रहे तो उसको डबल कैसे करना है. लेकिन ट्रस्ट मी कम्स विद अ रिस्क. हाँ, आई एम नॉट गारंटिंग एनीथिंग, आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर. पीपल हु थिंक and who guarantees you are faking it. Everything comes with a risk. Lekin if you take the risk, you will get the reward. Why? Money is in abundance. Trust me on that. You can make a lot. So hand holding का मतलब है ensuring whatever difficulties you are having, whatever mindset difficulties you might have as a trader, those are taken care of. That is what we do in a hand holding way. So that is done in mentorship program, and we keep discussing throughout the week. It's not just Saturdays. हम ड्यूरिंग द वीक टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस करते हैं, चार्ट्स पोस्ट करते हैं मेंटरशिप में. लेकिन अगर आपको वो नहीं करना है, यू कैन सिंपली गो फॉर मास्टर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सीजन 2 or master of waves for forecasting date and time, or you can also register for the BMW program. Amazing, guys. That's it from my side. I have taken your time and thank you very much. We were houseful today. Fabulous audience. Glad to get so much of you commenting here, talking about it and doing so many things, and how to find market top, how to find market lows. All of those things will be discussed in the BMW program. Ensure you take that step. How to buy options, how to buy puts. अभी तो हमने खाली कैंडलस्टिक पे 2 मेथड किया है, कैंडलस्टिक के ऊपर और मेथड्स है. गेट इनटू द वॉल्यूम प्रोफाइलिंग. यू विल बी अमेज्ड टू सी यार ये इंस्टीट्यूशन वाले सोचते कैसे. Okay, so great. It's a very discounted price if you think the value for what I have spent in terms of time, energy, my research, uska to value rakho yaar. If you think that's not valuable for you, but it is for me, करना है तो करिए, steps forward लीजिए, नहीं तो it's anyways okay. I'm really enjoying my markets, my trading anyways is going fabulous. And it's a fantastic resort at Cloud9 Lonavala. कुछ नहीं तो इधर आ जाइए. I'm here for a week more. You can meet me here at Cloud9 Lonavala, and it's a fantastic place. It's peaceful, amazing. And if you think you can create your own resort by trading, get it. Make it big is what I would suggest. Okay. Yes, Hemant, definitely. So get that. Register for the program. Okay, I think Hemant is registering. Santosh has already done that. Rohit is a part of mentorship. Pooja is already. A lot of people have taken that step forward. Anyways, okay, how to buy puts, how to do that. If you are a beginner, you can get season 1 without attending season 1, because season 2 is not a continuation of season 1. Season 2 is not a continuation of season 1. मैं clarify करना चाहूँगा doubt. Season 2 is very refined approach of something else. So season 2 is not repetition. It's a kind of techniques from season 1 also, plus volume profiling, plus new methods that I have come across, new techniques that will work in this kind of a market. That is what we are going to do in season 2. So you should have no prior knowledge of anything, not required. Okay, Santosh is saying done with the payment. Fantastic. Ashish, you are coming to Lonavala. Fabulous. You can simply call on 9920422202. My team will help you with the bookings of Cloud9. You can do that. And Hemant, thank you. So fabulous. I hope I have cleared everything. Nitin, don't worry about those things. So Nitin Gudwani, my team will get in touch with you and explain you everything. Thank you, guys. Thank you very much. I'm running out of time. I have time to spend with my family, enjoy with my kid. So here is my kid who has been with me. He's just 6 years of
5 years of age. So he has been listening to me, जो मैंने बताया, green candle, red candle, and that's why he really loves me. So thank you very much and enjoy your time. Shabak Khair, Ashish Kyal signing off from Ashish Kyal Trading Gurukul. Do follow me and do have a wonderful trader. See you in the Master of Technical Analysis program on 10th and 11th of April, or for the mentorship starting on 13th of March. Okay, lovely. Thanks a lot, guys. Have a wonderful time. Loved you all.